Hi. Hi, are you sure this course is just for 2499? Yes, and you know this is the only course with this expertise across the world. No way! Yes way. Don't delay. Enroll now. Geeks learning together. Hello everyone, welcome back to our channel. So I hope you are perfectly fine at your home and you are doing well. So in case अभी तक आपने channel को subscribe, like and share नहीं किया है, so just go for it so that you can get the latest updates about the lectures, about the courses on our channel. So if I'm not audible or not visible, let me know in the comment section, or else let's start with our today's session. So in the previous session, we learned about the types of numbers, the properties of numbers like decimals, fractions, integers in the number system. And in case अगर उससे related कोई भी doubt हो, so just let me know in that live session comment box so that I can clear your all doubts regarding that. And in case अगर आपने book solve कर रहे हो, मतलब कोई questions में doubts हो तो वो questions भी मुझे बता देना. So we will discuss in our later on classes. So let us proceed with our today's session. So today we are going to study the most important topic in 6th, 7th and 8th class, and of course the upper classes as well, that is rational numbers. So 6th class के NCERT में rational numbers अभी like होगा नहीं, but as per my knowledge rational number is very important topic. अगर आपको अभी class में नहीं है, so you have to still study so that you can grasp the topic fast, and in the upper classes you will learn it very well. So let's start with our today's session. Okay, so in the previous sessions I told you we covered all the types of numbers like fractions, integers, whole numbers, natural numbers, and decimals as well. So actually these all types of numbers come into the category of rational numbers. So basically it's like real number is divided into two parts, that is irrational and rational. And मैंने ये flow chart का start from the downward से किया था so that जब भी हम like what if I would start from the rational number and then I would explain the fraction, integers and etc part, तो कुछ doubts रह जाते हैं because directly हम upper part से start कर रहे हैं, then we are going to the basics. So it's better मैंने नीचे वाले part से like पहले आपको एक एक करके सारे नंबर समझाए, then it's very easy to understand the rational numbers because ये सारे types of numbers को मिला के ही rational number बना है. So let's start with our rational numbers today. We'll understand the properties and basically जो भी operations, जो भी properties है, that would be exactly, not exactly, but that would be similar to our previous sessions because fractions, integers and etc सबको मिला के ही rational number बनता है. So let's start with our rational number, and also please practice along with me and please do all the questions. Please refer any book which you like because this topic is very important, and of course as per I always say in my previous session that in maths practice is must. Practice के बिना you won't be perfect. So yes, let's proceed. Okay, so first and foremost, what is actually rational numbers? So rational numbers क्या होता है कि कोई भी number in the form of a by b is called a rational number. अब यहाँ पर दो condition होती है, that is a and b should be integer and the denominator, that is denominator b, should not be equals to 0. So for example 2 by 3, 3 by 4 and 10 by 6 or 8 by 9, these all are, or let's say minus 2 by 3. So these all are rational numbers. क्यों? क्योंकि एक तो first point, that is it is in the form of a by b, and the second point, that is a और b दोनों individually integers होने चाहिए. So you can see 2, 3 integer, 3 and 4 also integer. These are positive integers. हमने integers के section में पढ़ा था what are integers, what are the types of integers, what are the properties of integers. तो पहले वो वाले सेशंस एक बार देख लेना
because इस सेशन में we will directly perform the question, we will directly understand the operations. I'll not teach from the basic of operation because you are familiar with all the operations in the previous sessions. So yes, so this is called a rational number. तो एक और बार पढ़ते हैं, rational number क्या होता है? कोई भी number जो a by b के फॉर्मेट में हो, लाइक वी कैन से कि फ्रैक्शन फॉर्मेट में हो, बट इट्स नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड, आई विल टेल इट लेटर. सो कोई भी नंबर a बाय b के फॉर्म में हो, प्लस a और b इंडिविजुअली क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. एंड जो b है दैट इज डिनोमिनेटर, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज कंडीशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी. So this is the definition of rational number. Let me erase. Let's go further. Okay, so there are some questions now कि हमने पढ़ा कि जो भी मतलब मैंने अभी फ्लो चार्ट में दिखाया कि जो भी सारे नंबर्स कैटेगरीज थी, नेचुरल नंबर की, इंटीजर की, फ्रैक्शन की, होल नंबर की, तो अब उसे हम रेशनल नंबर से रिलेट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इज एवरी रेशनल नंबर अ नेचुरल नंबर? सो थिंक अबाउट इट कि क्या सारे रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने देखी, तो सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है. सो लेट मी रिवाइंड यू कि नेचुरल नंबर क्या था. सो नेचुरल नंबर इज कि जो नेचुरली स्टार्ट होता था, लाइक नेचुरली हम किसी से भी पूछे, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स कहते थे. हम किसी से भी पूछे कि काउंटिंग स्टार्ट करो, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 से. 1 and 2 3 एंड टिल एंडलेस, जहाँ तक उसका मन हो या जहाँ तक हमने बोला है. सो दीज नंबर्स वर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है. अगर आपको नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, नेचुरल नंबर क्या होता है, वो सारा देखना है, सो यू हैव टू डू विजिट माई प्रीवियस लाइव सेशंस. सो ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इज एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है? a बाय b के फॉर्मेट वाला नंबर, a और b इंटीजर है, b नॉन इक्वल्स टू ज़ीरो. क्या सारे, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी रेशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है? सो आई एम वेटिंग, लेट मी नो इफ यू कैन थिंक अबाउट इट. ओके, ज़्यादा प्रेशर मत दो, मैं बताती हूँ उसका आंसर. सो वेट, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द आंसर ऑफ दिस कंसेप्ट. सो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर्स दैट वर 2 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा, ये रेशनल नंबर्स हो सकते हैं. हाउ? लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम राइटिंग लाइक 2, ठीक है, अब मैं इसको a बाय b के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ. 2 बाय 1 कोई चेंज नहीं होगा, इसका रिजल्ट 2 ही रहेगा. सो यू कैन सी कि इसको मैंने a बाय b के फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर दिया, और देखो तो 2 और 1 एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर्स है. सो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स जो होंगे सबको मैं ऐसे डिनोमिनेटर बाय 1 लिखकर a बाय b के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ. तो सारे रेशनल नंबर जो हैं दैट वुड बी सारे नेचुरल नंबर जो हैं दैट कैन बी कॉल्ड एज रेशनल नंबर. बट रेशनल नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल हो या ना हो. लाइक 2 बाय 1 इज़ अ रेशनल नंबर एज पर अभी देखा, तो वो नेचुरल नंबर है. बट ज़रूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम राइटिंग 4 बाय 3, नाउ दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर बट दिस इज़ अ रेशनल नंबर, राइट. सो इट्स नॉट अ कंडीशन कि सारे रेशनल नंबर्स जो होंगे वो नेचुरल होंगे, बट द कंडीशन इज़ उल्टी, थोड़ी वाइस वर्सा है. दैट इज़ सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो ज़रूर रेशनल नंबर कह सकते हैं. So I hope you understood the answer of this condition. Now, what was my other question? Let me show you. Now, next question is 0 a rational number? So what do you think? 0 rational number है? Okay.
So let me explain you the answer. Yeah. So yes, 0 is a rational number. How? क्योंकि 0 है, ठीक है. अब 0 बाय मैंने 2 लिख दिया तो इसका आंसर भी 0 ही होगा. ये देखो, ये a बाय b के फॉर्मेट में हो गया एंड 0 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीजर. सो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसका रिजल्ट 0 ही आ रहा है एंड मैंने इसे a बाय b के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज अ रेशनल नंबर. सो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर. Let's move forward. Let's see our other question and let me. Yeah. Is every rational number an integer? Now, this is an important question क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर के इंडिविजुअली a और b पार्ट इंटीजर होना चाहिए, ठीक है. तो उस अकॉर्डिंग क्या सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर होंगे? थिंक अबाउट इट. रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी, कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल सोचो, देन रिलेट करो कि क्या वो इंटीजर है. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी. सो थिंक अबाउट इट. ओके, लेट मी शो यू द एग्जाम्पल. Okay, so yes, every integer is a rational number, but a rational number need not be an integer. Yes, so as per कि हमने नेचुरल नंबर में एग्जाम्पल देखा कि जो था 2 था हमारा, उसको मैं 2 बाय 1 लिख दे रही थी तो वो रेशनल नंबर हो जा रहा था, ठीक है. सिमिलरली अब मैं -2 को, जो कि एक इंटीजर है, इसको भी मैं -2 बाय 1 लिख सकती हूँ. एंड since this part is a and b and a और b individually integers है and since it's in a format of a by b, so this is called a rational number. This is a rational number, I mean. So every integer, similarly ऐसे सारे integers -3, -4, 2, 3, 4 जो भी integer, positive and negative integer, including even 0, we understood in the second condition. तो सारे इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. बट रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग -4/3, सो इंडिविजुअली देखो तो -4 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, बट अलॉन्ग विथ -4/3 अगर मैं पूरे की बात करूँ, सो इट्स नॉट एन इंटीजर बट दिस इज अ रेशनल नंबर. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर होंगे, बट येस वी कैन से दैट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. तो दैट वर्ड आई एम टेलिंग कि हमने जितने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर्स, तो वो सारे नंबर्स तो रेशनल नंबर होंगे. बट रेशनल नंबर की इंडिविजुअल भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और ये यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो सारे नंबर्स का मिक्सचर है, राइट. बट डेसिमल को मैं फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हो, बट रेशनल नंबर सबके फॉर्मेट में होता है. सो इट्स लाइक या रेशनल नंबर के अंदर डेसिमल कैटेगरी नहीं आती है. आई एम टॉकिंग अबाउट कि टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हमने पढ़े थे. सो येस, वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर. तो ये सारे इंडिविजुअली अलग अलग नंबर्स है, बट ये सारी कैटेगरी किसकी है, रेशनल नंबर की. तो इन सारे नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर में होगी individually, ठीक है. So similarly the last part was that is every fraction a rational number or is every rational number is a fraction. So yeah, we can say again कि fraction, जो सारे fractions होते हैं वो of course that are rational number, but it's not again necessary कि सारे rational number जो होंगे वो fraction होंगे, ठीक है. So I hope you understood these 4 categories. Now let us move forward. Okay, let's come to the now properties of rational numbers. So ये सारी properties हमने previous types of numbers में भी पढ़ी थी. What is closure property, what is commutative, what is associative, what is distributive. In fact there are other properties like inverse property and identity property as well. But जो ये 4 property है, that is a must, that is the most important properties of any number. So let's start with our first property, that is closure property. Now
क्लोजर प्रॉपर्टी को आप एज अ वर्ड रेफरेंस अगर सोचो, सो इट्स लाइक अ क्लोज एंटिटी और समवट एम्बेडेड एंटिटी कि रेशनल नंबर के जो ऑपरेशंस है समवट क्लोज्ड. सो लेट मी एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं कितने भी रेशनल नंबर्स को ऐड करूँगी, द रिजल्ट वुड बी रेशनल नंबर. किसी भी रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूँगी, अगैन द रिजल्ट विल बी रेशनल नंबर. एंड किसी भी रेशनल नंबर्स को 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करती हूँ, द रिजल्ट वुड बी अगैन अ रेशनल नंबर. So this is the property, or this is the closure property, that rational numbers, suppose we are talking about any x and y, so it would result somewhat z. So x, y and z, 3 of them would be a rational number. So it's in a closed, we can say it's in a closed addition of rational number, or we can say closed subtraction, closed multiplication. Now the fourth operation is division. Again, now you are thinking कि division में भी same चीज़ें हो सकती है. Yes, of course. किसी भी दो numbers, for example 2/3 and let's suppose 4/3, मैं इसको डिवाइड करती हूँ. तो डिवीजन में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन के कैसे करते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. इफ़ यू वांना अंडरस्टूड दिस, देन जस्ट गो एंड विजिट माई प्रीवियस सेशन. तो yes, 1/2 is the answer and 1/2 is again a rational number. So division also follows the same property, but there are some constraints, like कि अब for example if I am thinking about 0. Now 0/2 is 0 and this is a rational number, we understood in previous slide. But what if I write 2/0? Now this is a not defined condition. So here is the constraint कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे divisions जो हैं would result in a rational number. या बट अगर मैं इस कैटेगरी को ओमिट कर दूँ, इस कैटेगरी को साइड कर दूँ, देन येस वी कैन से कि इस डिवीजन में भी इस कंडीशन को छोड़ के डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है, ठीक है. बट वी डू नॉट स्पेसिफाई डिवीजन बिकॉज अगर एक भी ड्रॉबैक रहता है तो वी कैन नॉट इंक्लूड इट इन दी प्रॉपर्टी. सो दिस इज द थिंग इन डिवीजन. Now, I hope you understood the closure property. Let us understand now the commutative property. Now, what is commutative property? तो commutative properties हमने previous session में पढ़ा था कि a plus b जो है it could be written as b plus a. ठीक है, a into b जो है it could be written as b into a, right? But a minus b could not be written as b minus a. It's not equal, and again a divided by b would not be equals to b divided by a. So the commutative property follows as we know in addition and multiplication. Let us check in rational numbers. So for example, if I would write as 2 plus 3 plus 4/3. So let's see, this is a and let's suppose this is a b in this case. Now what would be the result is 6/3. Now let us add b plus a and check whether it's responding like the way we thought. So 4/3 and 2/3. Again 4 plus 2 is 6, by denominator same 3. The results are same. So we can say that a plus b would be equals to b plus a. That is commutative properties follows in rational number and addition. Let's check about what about multiplication. We will take the same numbers. Let's say 4 2 8, 3 3 is a 9, 8/9. This is b into a. Let's check about a into b. So 2/3 into 4/3. Again 8/3. The answer C and C, these answers are equal. So we can say that again multiplication, commutative property in multiplication is also followed by rational number. Now let's check अगर subtraction में भी कोई ऐसी condition है, तो let's put down the same numbers. So 4/3, 2/3 minus 4/3, it would be minus 2/3. Okay, this is a minus b. Let's check about b minus a. So
It's 4 by 3 minus 2 by 3. It would be 2 by 3. Now, you can see it's a positive rational number and it's a negative rational number. These both are different. You know the importance of sign we understood in the integer. So these both are different. So we can say कि subtraction में commutative property नहीं follow होती है rational numbers में भी. Similarly, let me erase all this. Similarly, division में, so we can say कि division में भी commutative property follow नहीं होती है. Now, let's speak about the associative property. So, associative property के according A into B plus C like A into B into C can be written as A into B into C, or we can say A plus B plus C can be written as A plus B plus C. So this is the associative property. Let us check if it's followed in rational numbers. So for example 2, so let's say 2 by 3, 4 by 3 and 6 by 2, suppose. These are A, B, C. So let's first do this. Okay, so let's check. I am checking this condition. So it is 8 by 9 into 6 by 2. So it would be like 2 4s are 8, 3 2s are 6, 3 3s are 9. It would be 8 by 3. Okay. Let's check this condition. Again 2 by 3, 4 by 3 and 6 by 2. So let's check this condition. So 2 by 3 is outside into 2, 2, 3, 2, 4 by 1. So it would be 8 by 3. So you can see here the answers are same. That means the associative properties is followed by rational number and multiplication. Let's check the condition in addition. Let me erase. Okay, so 2 by 3 plus 4 by 3 plus suppose 6 by 3 should be equal to 2 by 3 plus 4 by 3 plus 6 by 3. Let's check if this is equal or not. So 2 by 3 को बाहर रहने देते हैं. Now let's add this. This is 10 by 3 and let's do this 12 by 3. Let's check on the right hand side. This is LHS. Now let's check on the right hand side. So it's like 6 by 3 plus 6 by 3. This is there. It would be 12 by 3. Are they equal? Yes. That means that associative property is followed in rational number and addition. So yes. Now the fourth property, that is distributive property. So what does distributive property actually means? Like A into B plus C can be written as A into B plus A into C. So this is the distributive property. Now let's check अगर rational number में ये property follow होती है कि नहीं. So let's take the numbers as again 2 by 3, B is 4 by 3 and let's suppose C is again 6 by 3. Let's check. So 2 by 3, now 4 by 3 plus 6 by 3. Let's check the LHS first, then we'll compare the right hand side condition. So this is again 2 by 3 into, this is 10 by 3. Yeah, this is 20 by 3. 20 by 9. So 20 by 9. Let's check what is the answer over here. So 2 by 3 into B is 4 by 3 plus 2 by 3 into 6 by 3. So it would be like 4 2s are 8, 3 3s are 9 plus 6 2s are 12, 3 3s are 9
and 12 plus 8 is 20 by 9. So are they equal? Yes, they are equal. That means that distributive property is followed in rational numbers. So these are the most important properties in rational numbers, and in fact in any of the numbers you study. So I hope you understood these properties. In case कोई भी doubt, कोई भी query, कोई भी problem हो, you can tell me in the comment section. Okay, so the topic is representation of rational number on number line. So let us first draw this a number line. And number line हमने last sessions like previous sessions में complete कर ही लिया था. So let us understand it with the example. So I am given with 7 by 5 and minus 7 by 5. So it's like, let us plot it on the number line, 6 and etc. Similarly, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 and so on. Now 7 by 5, okay, so it can be represented as, can you imagine, like in a mixed fraction. So 5 and 6, yes, 1 2 by 5, like 5 and 5 is plus 2 is 7 by 5, and it can be written as 1 plus 2 by 5. yes. So अब हमें इस नंबर को बेसिकली प्लॉट करना है नंबर लाइन पे. सो इट इज़ 1 प्लस 2 by 5. तो वी विल गो ऑन 1, राइट. अब मुझे जो नंबर चाहिए वो 1 प्लस 2 by 5. It's smaller than, like it's very smaller than 2. So इसके बीच में नंबर होगा क्योंकि 1 में ऐड करना है एंड दिस नंबर इज स्मॉलर देन 2. What I'll do is I'll plot over here five parts, 1 2 3 4 and 5 parts and some more parts. So here it will lie, like 2 by 5 will lie here, and overall the number would be like 1 plus 2 by 5, that is 7 by 5 would lie over here. Yeah. So similarly, minus 7 by 5 can be written as minus 1 2 by 5. Yeah, so it's like minus 1 minus 2 by 5. ठीक है, तो मुझे इधर जाना है. सिमिलरली मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी एंड 1 2 3 4 5. So this point will be minus 7 by 5. So this is how we plot in number line the rational numbers. Similarly, wait, the question over here is 2 by 3 and minus 2 by 3. So it's a task for you to plot these number on a number line. I'm waiting for a second. You can plot, or otherwise we will discuss it in the next class if you wanna answer after this session. So I'm waiting if you can write the question. Okay, so let us discuss this in the next class. Just write the question and let's move on forward. Okay, now the part over here is comparison of rational numbers. So there are some properties before comparison we should know about the rational number. That is, जैसे हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि हर पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, क्योंकि वो नंबर लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स थे. सिमिलरली every positive rational number is greater than 0. It will also lie in the right side. Every negative rational number is of course lesser than 0. Now every positive rational number is greater than every negative क्योंकि वो राइट साइड पे नंबर लाइन के जो राइट साइड पे है दैट इज ग्रेटर. एंड it's similar thing, every rational number represented on the number line on the right side is greater than every number on the left side of the number line. So these are the properties. अब ये वाली जो properties है that will use in the comparison of rational numbers. Okay, so let's do this. Now here it's a very simple question, 3 by 7 and minus 1 by 4. You can see this number is negative and this positive, and according to property जो भी positive rational number होगा that would be greater than a negative rational number. So again 3 by 7 is greater than minus 1 by 4.
Now here 2 by 7 and 3 by 5 they both are greater. So what we will do is, जैसे हम fractions में compare करते थे, we will follow the same part. In case आपने मेरा fraction वाला session नहीं देखा है, so go visit and learn from there. I am solving over here directly. So 2 by 7 है और 3 by 5, right? So what I'm going to do is I'm going to take the LCM over here. So the LCM of 7 and 5 is 35. Okay, now what I'm going to do is I'm going to multiply, divide both sides the LCM. So that this will be 10 by 35. This will be 21 by 35. Now the denominators are same. We have to compare just the numerator. And as you can see, 21 is greater than 10. So 2 by 7 is lesser than 3 by 5. I hope you understood it. It's very simple. We solved all these questions in our fractions session. So yeah, let us move forward. Now ascending and descending order. अब आपको compare करते आ गया है, so it's very easy for you to arrange these in ascending and descending order. Ascending order का मैं एक बार बता देती हूँ. It starts from smaller to greater and descending starts from greater to smaller. Okay, so let me erase this. Yes. Now the question over here is minus 5 by 4, minus 5 by 6, 2 by 5, 7 by 4. Now you can see कि ये दोनों numbers negative है, तो ये दोनों तो छोटे होंगे. So this will come first. अब इन दोनों में से हमें compare करना है. These both are positive. This will come afterwards. So अब इन दोनों में से compare करके लिखना है. मैंने question divide कर लिया. अब मुझे क्या करना है? minus 5 by 4 और minus 5 by 6 में comparison करना है. Now 4 और 6 का LCM would be, let's solve it. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 and 3, it is 12. So 4, okay, minus 5 into 3, 4 into 3, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं. minus 5 by 6 की टेबल में 12 कब आता है? 2s are 5 2s are, so it will be minus 15 by 12, it will be minus 10 by 12. Yes, so let me erase this. Yes, so okay, so now thing is कि 15 by 12 है और minus 10 by 12 है. So this number is of course smaller and this is greater. Minus 5 by 4 था, then minus 5 by 6. Now 2 by 5 and 7 by 4 को compare करना है. Let me erase this. टू बाई 5 और 7 by 4 को कंपेयर करना है. ठीक है, तो अब इसका LCM इज लेट सपोज 20. तो 5 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इधर मैं 4 से कर देती हूँ टू मेक द डिनोमिनेटर सेम सो दैट वी कैन कंपेयर द न्यूमरेटर्स. 7 5 is 35, 4 5 is 20, 4 2 is 8, 4 5 is 20. Now you can see this number is greater, that is 7 by 4 is greater. So अब आ जाएगा 2 by 5 and then 7 by 4. So it's simple and easy to understand. Now solve this question in descending order. I have given the example of ascending order. It's on to you that how you solve the descending order. I'm waiting so that you can write the question, and अगर इसी सेशन में solve कर लेते हो तो मुझे comments में आंसर बता देना, or in case we'll discuss it in the next class. So I'm giving you these questions like for your practice, क्योंकि अगर सारे questions मैं बता दूँगी so you will not do the practice as well. So this is for your practice. Okay, so I hope you have written the question. Descending order में arrange करना है, that is बड़े से छोटा, सबसे बड़ा number would come first and so on. Now let us move forward. Now here are some questions on simplifications based on the
rule based on the operations. So instead of कि मैं आपको एक एक operation like addition कैसे करते हैं, subtraction, multiplication, division, it's very good if we'll discuss it with the questions. So here the question first is minus 1 by 4. Let me write over here minus 1 by 4 plus 5 by 8 minus of minus 3 by 6. Now let us simplify it. तो minus 1 by 4 plus 5 by 8 तो as it is. माइनस माइनस हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, इट वुड रिजल्ट एज प्लस. ठीक है, अब देख लो कोई सा भी फ्रैक्शन या कोई सा भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. येस, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लोवेस्ट फॉर्म. तो मैं यहाँ पर इसका लोवेस्ट फॉर्म लिख दूंगी. 3 1 3 2 6. येस, नाउ अब मुझे इस नंबर्स को सॉल्व करना है. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज take the LCM. LCM is 8. Now 4 2 तो minus 2 plus 1 5. So I'm solving here directly because previous sessions में मैंने एक एक ऑपरेशन बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे हमें LCM लेना है, देन हमें डिनोमिनेटर से कंपेयर, देन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई है, इसलिए आई एम सॉल्विंग इट हियर डायरेक्टली. सो 4 ओके. So minus 2 plus 5 is 3, 3 plus 4 is 7. The answer would be 7 by 8. Okay, let's solve. So it's very easy, you know. It's just like कि जैसे हम fractions में कर रहे थे, जैसे हम integers, decimals and multiple parts में कर रहे थे. It's all about same. Just आपको बहुत ध्यान से operations करना है. So yes, the result is again a rational number. Let's solve the second question. Second question is 4 by 10 minus of minus 3 by 8 plus 4 by minus 5. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 4 by 10 को ऐसे रहने देते हैं. अगेन माइनस माइनस विद रिजल्ट इनटू एडिशन. नाउ माइनस 4 by minus 5 है, तो 4 by minus 5 है. मैंने पढ़ाया था आपको कि इस ऐसे सिचुएशंस में व्हाट वी हैव टू डू इज़ -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो उससे क्या होगा, साइन जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी. माइनस माइनस प्लस. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस ऑफ -4 by 5. नाउ वी नो कि जो प्लस माइनस है दैट वुड रिजल्ट एज माइनस, सो वी विल राइट हियर माइनस. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. अब देखो इसका एलसीएम निकालते हैं. 10 और 5 का एलसीएम तो 10 होगा. ठीक है, 10 और 8 का एलसीएम चाहिए मुझे. सो 10 और 8 का एलसीएम निकाल लेते. ओके, 5 2 is 10 2 is 20 2 is 40. तो द एलसीएम इज 40. नाउ 10 4 is 4 4 is 16 प्लस 8 5 is 5 3 is 15 माइनस 5 8 is 8 4 is 32. नाइस. Now 16 minus 32 is minus 16. Minus 16 plus 15 by 40, it would be minus 1 by 40. So the answer is again a rational number, minus 1 by, oh sorry, this answer minus 1 by 40. Let me erase all this. So I hope you are getting how to solve these types of questions. मतलब हमें जब डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन करते आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंडिविजुअल हर नंबर की क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए वी आर जस्ट सॉल्विंग इट डायरेक्टली. नाउ थर्ड क्वेश्चन मैं बताती हूँ. अगैन फोर्थ विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन. लेट मी राइट 10 by -10/7 into 5 by 15 ब्रैकेट्स minus 9 by 5 into 4 by 3. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. सो फर्स्टली कोई नंबर अगर लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, येस दिस नंबर इज कन्वर्टिंग. -10/7 मैं ऐसे लिख दूंगी. 5 1 5 5 3 15. ओके, यहाँ पर कोई नंबर कन्वर्ट हो रहा है, नहीं. आई विल राइट ओवर हियर इन दी ब्रैकेट्स. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. -10 into 1 is -10. 7 3 is 21 माइनस. Okay, 9 4 is 36, 5 3 is 15. Good. So now we have to basically minus is addition, but the sign would be negative. 21 और 15 का LCM निकाल लेते हैं फटाफट. So it would be
3 7s are 21, 3 5s are 15, 7 and 5. So 21 5s are 105. So the LCM is 105. Now it would be 5 minus 50 minus 15 की टेबल में 105 is 5 5s are 25, 75. Okay, 15, 7 5s are 35, 7s are 7 10. Okay, 7s are. Now 36 7s are, let me do over here the rough. 36 7s are 252. So it will be 252. Now minus minus plus, so I have to do 252 plus 50 is 302. That answer would be minus 302 by 105. The answer here is minus 302 by 105. Now the last question for you is homework. Let me erase this. Till then, just write down all the just write down the fourth part. You have to do it for yourself. मैंने उसमें addition, subtraction and multiplication का simplification दिया है आपको. You have to solve it by yourself. Okay. So I guess you have written the question, and I hope you understood the concepts of rational number, the operation, the simplification, and the properties of rational number, and some doubt based questions regarding rational numbers. In case आपको कोई भी query या कोई भी doubt होता है rational number के regarding, just let me know in the comment section. We'll solve it later. So till then, thank you, bye bye, and meet you later on.